Bismillahirrahmanirrahim. I am here, Muhammad Tayyab from Army Public School and College, Kanewal. Today, our physics lesson for class 9. Welcome you to all UPSEX online sport program. Today, our topic is states of equilibrium, and our objective is at the end of the lesson, students will be able to understand states of equilibrium, and our success criteria is concepts must be clear. Today date is 15 April 2020 and week is 3. First of all, we will discuss our previous topic, condition for equilibrium. You know that the first condition for equilibrium, a body is set to satisfy first condition for equilibrium if resultant of all the force acting on it is zero. Let n number of force F1, F2, F3, Fn are acting on a body such that F1, F2, F3 and so on Fn is equal to zero. Sum of Ffx and sum of Ffy is equal to zero. A book lying on a table or a picture hanging on a wall are at rest and thus satisfy first condition for equilibrium. Next one is a second condition for equilibrium, and the definition is that a body satisfies second condition for equilibrium when the resultant of all the torque acting on it is zero. Sum of torque is equal to zero. This is the second condition for equilibrium. Now today our topic is states of equilibrium. There are three states of equilibrium: stable equilibrium, unstable equilibrium, and neutral equilibrium. What is stable equilibrium? If the body returns to its original position after being displaced slightly, it is said to be stable equilibrium. Um, I will play with the mouse. Position after being displaced slightly, it is said to be stable equilibrium. Explanation: if the body is lifted from one edge and then allowed it to fall, it will come back to its original position. एक बुक टेबल पे पड़ी हुई है, अगर उसको स्लाइटली से हम उठा के छोड़ दें तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, तो इसको बोलेंगे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम. इसकी डेफिनेशन आप देखें, a book is said to be in stable equilibrium if after a slight tilt it returns to its previous position. अब इसको थोड़ा सा टिल्ट करें और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर दोबारा वापस आ जाए, तो ये आपके पास जो इक्विलिब्रियम होगी वो आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी. Reason of stability: when the book is lifted, its center of gravity is raised. जब आप बुक को लिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं, ऊपर करते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है उसकी रेज हो जाती है. द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट पासिस थ्रू द बेस ऑफ द बुक. अ मूवमेंट ड्यू टू वेट ऑफ द बुक ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. जिस वजह से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर बैक आ जाती है, तो इसको बोलते हैं आप स्टेबल इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट वन इज unstable equilibrium. Unstable equilibrium is that a body is said to be unstable equilibrium if it does not come back to its original position when it is slightly displaced. When a body which is in unstable equilibrium is disturbed, its center of gravity is lowered. For example, a pencil standing on its point or a stick is vertically standing position. एक पेंसिल को आप स्टैंड करें फ्लोर पे, उसके बाद अब थोड़ा सा उसको हिलाएं या टिल्ट करें तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर बैक ना आए, वो उसके बाद ले डाउन हो जाती है, स्टैंड नहीं रहती, तो इसका मतलब है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर दोबारा नहीं आई, तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम होगी, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी. एंड द डेफिनेशन इज दैट इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक. If a body does not return to its previous position when set free after a slightest tilt, it is said to be unstable equilibrium. ये मैंने पेंसिल की आपको एग्जांपल दी है, थोड़ा सा इसको आप टिल्ट करें, उसके बाद जब आप रिलीज करेंगे या फ्री करेंगे तो पेंसिल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर बैक नहीं आएगी, तो ये आपके पास जो इक्विलिब्रियम होगी ये आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी. नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. व्हाट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम?
If an object remains, whether it is after being displaced, it is said to be in equilibrium. And the definition is that is written in your textbook. If a body remains in its new position when disturbed from its previous position, it is said to be in states of neutral equilibrium. If a ball is pushed slightly to roll, अब एक बॉल पड़ी हुई है, आप उसको थोड़ा सा हिलाएं, इट विल नेदर कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लॉ। तो जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी, जब उसको थोड़ा सा आप हिलाएंगे या उसको फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी, तो वो अपनी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगी। नो इट विल रोल फॉरवर्ड, नॉर इट विल रोल फॉरवर्ड, रेदर इट विल रिमेन एट रेस्ट। वो दोबारा रेस्ट में तो आ जाएगी, लेकिन अपनी पोजीशन पर दोबारा नहीं आएगी। तो इसको आप बोलते हैं नेचुरल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। The reason of neutral equilibrium: if the ball is rolled, its center of gravity is neither raised nor lowered. इसकी center of gravity ना raised होती है ना lower होती है. This means that its center of gravity is at the same height as before. तो height तो same है क्योंकि वो floor के ऊपर पड़ी हुई है, तो जिस वजह से वो अपनी position को change करती है, इसको बोलते हैं आप neutral equilibrium. Next, I will share you the animation about what is the states of equilibrium. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इक्विलिब्रियम की स्टेट्स को पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस लेक्चर से पहले ज़रूरी है कि आप इक्विलिब्रियम जो उससे पहले वाला लेक्चर है इसको ज़रूर देख लें, और उसमें जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उनको भी देखें। बहरहाल स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम ये कि अगर किसी बॉडी के अंदर हम कोई फोर्स लगाएं और उसमें कोई हरकत पैदा करें, तो बॉडी हरकत के बाद वापस अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन कर। इसकी बहुत सीधी और सादी मिसाल हमारे पास एक पेंटिंग की है जो दीवार पे लटकी है। अगर हम पेंटिंग की एक तरफ से अगर पेंटिंग को पुश करते तो क्या होगा? पेंटिंग थोड़ा दूसरी तरफ जाती है, वो वापस दोबारा अपनी पोजीशन पे आती है। इसी तरीके से अगर दूसरी तरफ से करते हैं तो भी ऐसे होगा। तो हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखते हैं। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कि आप अगर एक पेंसिल को अगर उसको खड़ी करना कोशिश करें उसके नोक, तो आप देखेंगे जब थोड़ी देर तक तो वो पेंसिल अपनी जगह पे रहेगी, उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट पे या राइट साइड पे आपकी वो पेंसिल गिर जाएगी। यानी जब कोई बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को कायम ना रख सकती हो तो उसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की मिसाल बिल्कुल ये बॉल है जो टेबल के ऊपर है। अगर हम इस बॉल को इस डायरेक्शन में मूव करें या इस डायरेक्शन में मूव करें, ये बॉल अपने मूवमेंट के बाद दोबारा जिस पोजीशन पे भी जाएगी, क्या होगा, वो अपना इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन रखेगी। इसकी सिंपल सी मिसाल यही है कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, ये इसको हम जितना भी मूव करेंगे क्या वो ये चेंज नहीं होगा। Next one is stability and position of center of mass. That this diagram is given on your physics textbook, page number 102. He is saying that as we have learned that position of center of mass of object play an important role in their stability. To make them stable, their center of mass must be kept as low as possible. आप center of mass को जितना low करेंगे उतनी आपकी stability maintain रहेगी। जिस तरह आप लोग देखते हैं कि एक कार है, उसकी हाइट जितनी छोटी होती है उतनी ज़्यादा ग्राउंड के ऊपर वो होती है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतनी जितनी लो करती हैं उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी वो उसकी रोड ग्रिप भी ज़्यादा होती है और वो रोड पे मोस्ट स्पीड से भी ज़्यादा मूव करती है। It is due to this reason that racing cars are made heavy at the bottom and their height is kept to the minimum. Circus artists such as tightrope walker use long poles to lower center of mass. In this way, they are prevent from topples over. Here are a few examples in which lower center of gravity makes the object stable.
These objects return to their stable state when disturbed. In each case, center of mass are vertically below their point of force. This make their equilibrium stable. आप इससे में आप ये बात देखते हैं कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इतना लो करेंगे उतनी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी. Next, I will show you the animation about stability and position of center of mass. Okay, so let's talk about center of mass and stability. So we'll start off with center of mass. Now, the center of mass is a point at which all the mass of an object appears to act. It doesn't actually have to be there. It just appears to be there when you hold the object from a certain point or from any point. Now, there are certain rules with the center of mass. The first one is it doesn't have to be on the object, which sounds a little peculiar, but hopefully that's obvious. The second one is when you hang an object from any point on that object, the center of mass will always be directly below the pivot. For instance, a football here, well, the center of mass, nice and easy, bang in the center. If it's a symmetrical object, such as this ball, then the center of mass will be in the center. Tractor, a little bit more difficult, but the center of mass will be somewhere between those two wheels there. A little bit lower because the engine is much heavier than the cab part on top. A screwdriver, right about there. And here we have a tripod for a camera mount. Now this one's a little bit strange because the center of mass here is not actually on the object at all. Now, they're all the four different center of masses. Every single object that is made of mass, made of matter, has a center of mass. Now, only one of those objects would fall if they were all stood how they are right now. Only one would fall over, and that's a screwdriver. And if you notice, that's the only one where the center of mass is not acting directly above the base, the bit that's touching the ground. So if we look at stability, let's consider a person. If you go up on one leg, then you stand, you tend to naturally lean, put your foot out the opposite way. The reason you balance is because of moments. Your anti-clockwise moments, so the turning effect anti-clockwise equals the turning effect clockwise. If you remember, a moment is equal to the force times the distance from the pivot. Also, your center of mass is directly above the base. If that wasn't true, you wouldn't balance. Now, that's not very stable, however. So stability and balance is slightly different. You can be balanced, but not stable. So here, our man has become a little bit more stable. And he's become more stable by putting his feet down. Much more stable. Even more stable by putting your feet apart. If we think about our sumo wrestler example, sumo wrestlers are very good examples of people who make themselves very, very stable. Here's someone who's even more stable. And if we look at what's happening here, that's the most stable person we're going to look at. If we look at what's happening to increase stability, you can do one of two things or both. The first thing you can do is you increase the size of your base and make sure that your center of mass is above that base. The second thing you do is you lower the center of mass. The lower your center of mass is, closer it is to the floor, the more stable an object you have. Okay, and that's center of mass and its relationship to stability. Next, this is your important MCQs that are related to your chapter 4, and answer is also given. You will learn for your future paper. Important short question: explain what is meant by stable, unstable, and neutral equilibrium. Give one example in each case. You know that I have already explained the difference between stable and neutral equilibrium. This question is you already know about that because we have already discussed in this lecture. And your assignment is learn and write question number 4.14 on page 106. Thank you.